Hello friends, welcome to Sanskar Edutech. Today we are going to discuss about introduction of database management system. Myself, Assistant Professor Abhijit Palse from DTSS College of Commerce, Autonomous. So before to start, we have covered some topics in a previous session, that is what is data, database and DBMS. What are the applications of database management system? What is the need of DBMS? And what are the drawbacks of file management system? Now, today we are going to cover the following subtopics. What are the advantages of database management system? Data abstraction and its types, mapping, data independence, instances and schemas. So, let's start with advantages of database management system. Now, to overcome from the drawbacks of the file management system, database management system is used with the following benefits. The first benefit is data redundancy control. Now, in a database system, the database gets stored centrally and controlled by database administrator. So, it results removal of duplicate data and save the memory storage space and execution time. For example, in bank management system, customer name, address and contact number will get stored centrally for accounts like saving, current and loan. So basically, whenever we are using a DBMS, so we are storing a data centrally. So because of that, benefit क्या हमें मिलता है? तो वहाँ पे जब डेटा एक ही जगह पे स्टोर होता है, तो वहीं से हमें क्या होता है, सभी अकाउंट्स के लिए डेटा आपको एक्सेस हो जाता है, राइट, जिसके वजह से आपका जो डेटा डुप्लीकेशन है, जो रिडंडेंसी है, वो क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है. नेक्स्ट, डेटा कंसिस्टेंसी, second benefit. So with the elimination of data redundancy and centralized control of database, we can achieve the benefits of data consistency. For example, a customer's address is stored at one location and which is accessed by both saving and current account of that customer. Now, if you change the customer address, then it will be correct and consistent for both the accounts. So that is the benefit of data consistency. Next, data integrity. So DBMS allows the database administrator to define the integrity constraint to the data in the database. For example, in customer database, we can enforce an integrity constraint like primary key, which will accept the unique customer number and it must not be empty. So as here you can see in a diagram, here the customer IDs are unique and these are unique because here we apply the constraint primary key. Now what is primary key? So primary key is a constraint which will apply whenever you want to accept a unique number in a particular column and that column will not accept a null value. So fourth one is data security. Database administrator is playing an important role of complete authority over the operational data, which enables him or her to define authorization check whenever access to sensitive data is attempted by other database users. Now, database administrator कौन होता है? So he is a person जो exactly क्या करता है? Rights assign करता है to the database users. तो जब database users डेटा को एक्सेस करने के लिए ट्राई करते हैं, तो उस केस में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चेक करता है कि उस यूजर्स को वो राइट्स दिए हैं कि नहीं दिए. अगर उस यूजर्स को राइट्स दिए हुए हैं, तो वो राइट्स के हिसाब से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को क्या करता है, राइट्स असाइन करता है और यूजर क्या कर सकता है, डेटा को एक्सेस कर सकता है, जिससे क्या होता है, कंप्लीट सिक्योरिटी मिलती है. नेक्स्ट, डेटा शेयरिंग. सो DBMS allows a user to share the data in any number of application programs and from anywhere. So data sharing can help the organizations to improve efficiency, share insights, make better decisions and collaborate with partners and vendors. So यहाँ पे बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम डेटा को शेयर कर सकते हैं कहीं से भी. तो कोई भी यूजर्स जो चाहता है डेटा को एक्सेस करना, वो क्या कर सकता है, एक्सेस करके डेटा को क्या कर सकता है, शेयर भी कर सकता है अदर यूजर्स के साथ, और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है. नेक्स्ट, efficient data access. So in a database system, the data is managed by DBMS
and all access to the data is through the DBMS providing a key to effectively retrieve and process the data in the database. Okay, तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम डेटाबेस में एक्सेस देते हैं तो डेटाबेस में एक्सेस देने के लिए आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर कहाँ पे डेटा स्टोर है, ओके, किस पर्टिकुलर टेबल में स्टोर है, और हर एक टेबल में क्या होता है, एक ऐसा कॉलम होता है जिस पे हम की अप्लाई करते हैं. सो की क्या होता है, प्राइमरी की, और ये की अप्लाई करने के बाद क्या होता है, उस कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यूज होते हैं और वो वैल्यूज यूज करके हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी एक ऐसा कॉलम है जिस पे हम की अप्लाई करते हैं और यूजिंग कस्टमर आईडी हम हर एक कस्टमर का यूनिक रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एनफोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स. So for high quality database, DBA can define and enforce data standards on database, which may include the naming conventions and data quality standards. Now, what is naming convention? So naming convention is where you can create a table, you must specify the table name, the name of each column, the data type for each column and size of each column. Okay, so ये एक particular rule होता है जब हम database टेबल या कॉलम को नेम देते हैं तो उसका पर्टिकुलर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 30 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, या नेम देते वक्त कोई भी ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं होते हैं. यू कैन यूज अंडरस्कोर इन बिटवीन दी वर्ड्स. सो दीज आर सर्टन रूल्स दैट कम्स अंडर नेमिंग कन्वेंशन. नाउ डेटा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स विच एंश्योर दैट companies are making data driven decisions to meet their business goal. So अगर क्वालिटी वाला डेटा अगर आप स्टोर करते हो तो उससे बेनिफिट क्या होगा, इफ यूजर जो डेटा यूज करेंगे सो दे कैन टेक अ इजीली डिसीजन बेस्ड ऑन दैट डेटा. बट इफ द डेटा इज नॉट हैविंग अ क्वालिटी, if the data is having certain unstructured data, then that data will not be useful, right? So that's why we need to provide data quality standards and DBMS help us to provide it. Next, data independence. So DBMS provide the interface between the application programs and the data, and when the changes are made to the data representation, the metadata obtained by the DBMS is changed, but the DBMS is continuous to provide the data to application program in the previously used way. Okay, so what it means? It means whenever we are doing any changes in a database, so it will not affect the actual application program because users are using the application program and they are accessing a data, whatever data they want. So it will not affect whatever they want to access because the actual internal details remain hidden for the users. So other users need not to worry about the internal database structure while accessing it. Next, reduce application development time. So DBMS supports many important functions that are common to many applications, accessing data stored in the DBMS, which facilitates the quick development of new application using existing database. Okay, so it means whenever you are accessing a data from the database, okay, you are getting a quick access, but the thing is what, कि whenever you want to develop a new application, you need not to make a changes in a database because you can use that same database and that will be accessible in a new applications, which will reduce your application development time. Now, the next topic, data abstraction, will cover in the next session. Thank you.